Assalamu alaikum and hello to everyone. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट हैं उनका जो पर्शियन गल्फ का विजिट है, तीन स्टेट्स का, सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई, 4 दिन के ये टोटल विजिट थे और इन चारों दिनों में उन्होंने 3 मुल्कों का विजिट किया। इस विजिट को लेके हम एनालाइज करेंगे। हम बुनियादी तौर पर 4 एस्पेक्ट को देखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने पर्शियन गल्फ का ही इंतखाब क्यों किया। जब वो पहले दफ़ा प्रेसिडेंट बने थे तो भी पहली दफ़ा सऊदी अरबिया गए थे, अब भी वहां पे गए हैं, तो ऐसा क्यों है, क्या इंटरेस्ट है। सेकंड पॉइंट हम जो देखेंगे कि जब उन्होंने विजिट किया है तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनकी पार्टी के लिए क्या गेन्स हुए हैं इस विजिट से, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि उनके विजिट का मिडल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट है, मिडल ईस्ट के लिए क्या गेन्स और लॉसेज हैं। और फिर लास्टली नाज़रीन हम बात करेंगे ग्लोबली इस विजिट की ग्लोबल क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन तमाम एस्पेक्ट के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। बट उससे जाने से पहले नाज़रीन, आपको स्क्रीन पे अगेन नजर होगा, दिस इज येट अनदर काइंड ऑफ सेशन ऑन current affairs and Pakistan affairs, which is very significant to those who are interested in appearing for the CSS as well as the PMS exam, because this course will not only cover the entire discussions of current affairs and Pakistan affairs 200 mark subject, but all other dimensions that relate to other compulsory and optional subjects. So this course is likely to significantly help you in your upcoming CSS examination. So get yourself enrolled because the classes are going to start from Monday. अब नाज़रीन, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बिल्ड करूँ तो डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने इस दफ़ा 2025 में जनवरी में उन्होंने ओथ उठाया था, तो उसके बाद से इनिशियली ही वाज इन द लाइमलाइट फॉर सम गुड रीजंस एंड फॉर सम बैड रीजंस। बट जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट था उनकी प्रेसिडेंसी का सो फार, दैट वाज हिज टेरर वॉर अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन द वर्ल्ड। और उसकी वजह से ग्लोबली ही वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एंड देयर वाज अ ग्लोबल शेकअप ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, मार्केट्स, और उस हवाले से ही वॉज अंडर प्रेशर। डोमेस्टिक वाले से हमने देखा कि कुछ मामलात बने, उनके कुछ लीक्स हुई, चैट लीक्स हुई, जिसकी वजह से उनको प्रेशर का सामना करना पड़ा। तो इन तमाम पोजीशंस में ही वाज अनेबल टू मेक अ फॉर्मल विजिट टू आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, ऑल्दो ही वेंट टू द रोम, जहां वो नए पोप के हवाले से भी विजिट किया था उन्होंने। बट जो पोप की डेथ हुई उस पर भी गए थे। बट दिस इज द फॉर्मल फर्स्ट विजिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट आउटसाइड, एंड दिस टाइम टू ही चोज द मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट के अंदर भी ही चोज सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कतर। जस्ट लाइक दैट, जब वो पहले प्रेसिडेंट बने थे तो 2017 में भी उन्होंने विजिट किया था सऊदी अरेबिया का, जहां बड़ा पॉपुलर हुआ था, उनका सोट डांस पॉपुलर हुआ था। बट इस दफ़ा भी उन्होंने विजिट किया, दैट्स वेरी हिस्टोरिक विजिट। इसकी बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं भी और होंगे भी। इन टोटल नाज़रीन, इन जो 4 दिन का विजिट था, इसमें उन्होंने तकरीबन $2 ट्रिलियन की जो डील्स हैं वो की हैं, that spread mostly in the fields of energy, in the fields of AI, science, technology, aviations, different aspect पे उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की डील्स की हैं। टोटल डील जो है वो $2 ट्रिलियन की हैं। उन्होंने अपनी वापसी पे कहा भी कि आई एक्सपेक्ट कि ये दे विल टर्न इनटू $4 ट्रिलियन ऑफ द डील्स, विच इज़ अ टोटल इन टोटल जो सॉवरन फंड्स हैं इन तीनों स्टेट्स के, उसके इक्वल जो है अमाउंट बनेगी। ऑब्वियसली मैनी ऑफ दोज आर द जस्ट कमिटमेंट्स, वो लॉन्ग टर्म में हैं, बट इट्स स्टिल अ सिग्निफिकेंट ऑप्टिक्स फॉर द डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अब नाज़रीन, इस विजिट को इंटरप्रेट करते हैं कि इस विजिट से क्या फ़ायदा होना है डोनाल्ड ट्रंप को। बट फ़ायदे से पहले हम बात करेंगे वाई ही चोज सऊदी अरेबिया। For various reasons he chose Middle East, because, and one of the reason was because Middle East is a region where he expected a win-win, where he has to not compromise anything and gain everything. Just like that, the Gulf states also thought that they would gain everything and not compromise on anything. So it was a clear win-win without any cost to his person or to his party or his state. Therefore, he chose this region. Besides that, he expected a lot of financial benefits from this visit, which actually had turned to be true, because $2 ट्रिलियन की डील किसी और रीजन में विजिट करने से कभी हासिल नहीं हो सकती थी, and that is what he wanted to gain. Besides that, this financial gain and investment pledges are also likely to kind of उसकी एक्सपेक्टेशन थी that this is likely to fit in his agenda, जिसको make America great again, या जो मेगा का एजेंडा है उसके साथ भी फिट इन और अलाइन करता है। और लास्टली नाजरीन, उन्होंने विजिट इसलिए भी किया बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की एक हिस्ट्री रही है, ही डज नॉट लाइक डेमोक्रेटिक लीडर्स एज सच एंड ही लाइक्स अथॉरिटेरियन रिजीम्स, और उसकी बहुत सारी जगहों पे वो इस बात का इजहार कर भी चुके हैं। और ये विजिट भी उन तीनों स्टेट में है जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं,
और उनकी जितनी खुल के तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की है, दैट वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जहां उन्होंने मोहम्मद सलमान की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, कतर की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, यूएई के रिजीम की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की। तो एक एक काइंड ऑफ उनकी जो आइडियोलॉजिकल थॉट है उसके साथ मैच होता था विजिट करना। दैट्स व्हाई ही वेंट टू द गल्फ रीजन। अब आते हैं नाज़रीन, व्हाट इज दिस विजिट, व्हाट डज दिस विजिट मीन फॉर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन जनरल। Obviously, नाज़रीन, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनली बात करूं तो द बेस्ट थिंग दैट ही गॉट वाज ऑल प्रेज। नोबडी, नॉट अ सिंगल वर्ड that could annoy him came in front of him. Instead, he was allowed to speak his mind. Sitting in Saudi Arabia, he was expressing his wish that Israel के साथ normalization हो जाए, Abraham Accord में Saudi Arabia भी add हो जाए, and there was no protest, no opposition, not a single word that would annoy him. So it was this visit was more like a music to his ears that he longed for some months, because when in the United States he faced a lots of criticism on so many issues. So this was a kind of I personally call it a Trump's vacation. So because it was Trump that who wanted to actually gain fame, he wanted to get flattery. That's what all he got during this visit into the Gulf region. Another personal gain is that he could claim now that whatever he pledged, make America great again, and he would make America a hub of global investment. He could claim that he did that. $600 billion की इन्वेस्टमेंट खाली बात की गई सऊदी की तरफ से, अलॉन्ग विद अदर थिंग्स एज वेल, और उसके साथ साथ हमने कहा कि $200 बिलियन की जो है वो परचेज की बात की गई कतर की तरफ से भी, यूएई की तरफ से भी एविएशन इंडस्ट्री के लिए. So he could pledge that whatever he promised, he delivered by this visit. So it's a personal image that he is a man of action, not man of words only. So that was a kind of thing that he wanted to project himself for, and he was able to gain through this visit. However, at the same time, अगर हम broadly US interest को देखें तो उसके लिए बड़ा फायदा है. Obviously बात है, significant amount of the US investments in the US in hundreds of billions of dollars, that is likely to significantly boost the production, the GDP, the jobs for the people, and obviously बात है, reducing the poverty and increasing the incomes of the people. So this wealthy investment, and that investment obviously जब सऊदी की तरफ से आती है तो it comes without any bureaucratic problems, because these are authoritarian regimes in which the leaders have the ultimate authority to take decisions. So इस हवाले से when they say that they will invest, it's just a go. They have to say yes, and the investment goes over there. So shortest possible time में the best possible deals that United States could get, it got from this visit. Besides that, US through these deals and through this visit, United States had enhanced its image in the region. उन्होंने वहाँ कोई wars की बात नहीं की, उन्होंने peace की बात की, इवन ईरान के साथ नेगोशिएशन करने की बात की, डील की बात की, तो और गजा के वजह से प्रॉस्पेरिटी की बात की. तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि उनका जो विजिट था, इट वाज आल्सो मेंट टू बोल्स्टर हिज इमेज. ट्रम्प इज वेरी पॉपुलर इन द मिडिल ईस्ट एंड ही इज वेरी पॉपुलर इन साउथ एशियन रीजन एज वेल, बट ही वाज वेरी पॉपुलर इन गल्फ रीजन, एंड दिस विजिट हैड ओनली एनहांस्ड the United States as well as Trump's image in this region. अब आते हैं नाज़रीन के what was in this visit for the states like Saudi Arabia. इन states के लिए इस visit में क्या था? Obviously बात है, जो entire Middle East है और including these states, this was a significant gain for खासकर नाज़रीन सऊदी अरबिया के लिए, because the Arab states were able to portray themselves as states that are in the that are the favorite of the world's most powerful country, the United States. And the United States had largely ignored their domestic issues like forced labor conditions, no mention of the human rights, no mention of the LGBT issues. So therefore they thought that this visit had actually distracted the global discussions about these states from the issues of human right nature to the issues of investments and economy, and therefore they were able to project a very positive image of the Middle East. Besides that, through investment, they are likely to significantly increase not just their leverage but also enhance their capital over the period of time. So एक financially भी Arab states जो हैं, they can stand up to that. और जो उनकी post oil जो transition है, transition away from oil जो journey है economies की, that this investment pledges are likely to help in that. Besides that, these states are also able to get defense deals, which means that these states could now have weapons coming from the United States, state-of-the-art weapons that would significantly boost not just their economies but also their security, keeping in mind the recent wars and recent insecurities in the region. Another benefit is the international standing of these states. Through these investments, these states have projected themselves to be the global
leaders. They project themselves to be global players and actors who have the capacity to even invite and kind of get praise from the world's most powerful country, United States. So जो global clout है उनका वो significantly increase हुआ है इस विजिट के बाद. Besides that, नाज़रीन, अगर मैं रीजन स्टेट की बात करूं तो सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी वो सीरिया के हवाले से थी. United States President not only announced lifting of all US sanctions on Syria, he also met the new Syrian leader Mr. Shara. और उस जो मीटिंग थी that was very unprecedented. और यूनाइटेड स्टेट्स के तरफ से जो sanctions ख़त्म की गई, that those lifting of sanctions had been considered a significant boost to the Syrian population, particularly because they have been suffering from the civil war and economic problems for long. और ये ऐसी मूव है जिसको अक्रॉस द पार्टी लाइंस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ही गॉट द सपोर्ट अक्रॉस द लाइंस विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल. एक बाइपार्टिजन सपोर्ट जो है उनको मिली है. सो दैट्स लाइकली टू सिग्निफिकेंटली चेंज द फ्यूचर ऑफ सीरिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट. बिसाइड्स दैट, अगर मैं इसराइल पैलेस्टाइन की बात करूं तो इस विजिट में उन्होंने इसराइल को जो फेवर देने की बात की उसमें सबसे सिग्निफिकेंट ये थी कि ही आस्क्ड द अरब स्टेट्स, द गल्फ स्टेट्स और खासकर सऊदी अरेबिया को to join the Abrahamic Accords, which was something that Israel has desired for long. और वो बहुत significant beneficial होगा इसराइल के लिए रीजनली भी और ग्लोबली. बट एट सेम टाइम उन्होंने गजा की प्लाइट की फॉर द फर्स्ट टाइम बात की. उन्हें एग्री किया कि जो गजा के लोग हैं दे आर लिविंग इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशंस, वहाँ मसाइल हैं बहुत सारे. और उन्होंने अपना एक फेवरेट जो आइडिया था कि आई वांट प्रॉस्पेरिटी, और अगले महीने उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किए दैट नेक्स्ट मंथ गजा के लिए बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होने वाली हैं, विच क्लियरली इज़ एन इंडिकेशन दैट ट्रम्प का जो प्लान था जो फरवरी में उन्होंने दिया था कि यूनाइटेड स्टेट्स माइट टेक ओवर गजा, उस हवाले से कोई डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है अगले महीने के लिए. हैविंग सेड दिस थिंग नाज़रीन, एट सेम टाइम इट वाज एक्सपेक्टेड कि जब ट्रम्प विजिट करेंगे तो शायद गजा में सीज फायर की कोई बात होगी, ऑल्दो सीज फायर की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई. एक और रीजनली जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था नाज़रीन, जो कि बड़ा डिफरेंट मैसेज था, वो था ईरान के लिए. डोनाल्ड ट्रम्प ने जब सऊदी अरेबिया में थे तो उन्होंने उस फोरम से, जो इन्वेस्टमेंट फोरम था, उस पर जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर इशू है वो डील करना चाहते हैं, वो पीस करना चाहते हैं. व्हेन ही वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स ही वाज थ्रेटनिंग ईरान टू बॉम्ब देम and he was giving them the ultimatums and the threats, but coming here he was offering them an olive branch and asking for a deal. Obviously this is because he was talking to the investors and you can't scare investors through the war mongering. तो एक सेंस में एक पॉजिटिव मैसेज दिया उन्होंने. इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट की आज स्टेटमेंट भी आई, उन्होंने कहा कि ही डजंट नो कि ट्रम्प की किस बात पर यकीन करे, जहां वो थ्रेट कर रहे हैं या वो पीस की बात कर रहे हैं. बट हिज स्टेटमेंट इज वेरी इंकरेजिंग फॉर द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी. अब मैं ग्लोबली बात करूं तो ऑब्वियसली बात है दिस विजिट हैज सम सिग्निफिकेंट ग्लोबल मैसेजेस एंड काइंड ऑफ एक इम्पैक्ट है उसका. सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि दिस विजिट हैज क्लियरली इंडिकेटेड दैट द 21st सेंचुरी वर्ल्ड एंड खासकर जो अमेरिकन प्रायोरिटीज हैं उसके अंदर दे आर मोर अबाउट बिजनेस देन द वैल्यूज. एंड देयरफॉर ये जो विजिट है इट्स अ क्लियर इंडिकेशन. He did not choose Europe, he did not choose anybody and anywhere else because one of the factor was because he wanted to do business and the best time to do business was to coming to this part of the world. यूरोप जाते तो यूक्रेन वॉर पे बहुत ज़्यादा होती बजाय बिजनेस की बात करने के. So therefore business is and economy is likely to dictate the state's foreign policies and United States is leading this aspect of the global diplomacy. This also indicates a changing global order. नाज़रीन, जो global order है that is shifting from geostrategic global order to geo-economic global order, और उसके अंदर जो economic interest हैं they precede the values, the politics and everything else. Another impact is the emergence of other regions as significant ones. Historically, the Western Bloc, led by the United States, was considered to be the most dominant bloc, but the visit to the Persian Gulf region is a clear indication that Europe's importance in the new global order is not as much as it used to be, and the other regions are also gaining significance in the US diplomacy and US foreign policy. और उनमें जो पर्शियन गल्फ है this is one of the most important ones. एक और एस्पेक्ट जिसके ऊपर बहुत कम बात हो रही है नाज़रीन, that is the climate factor. पर्शियन गल्फ which is one of the major producers of the oil, वहाँ विजिट करना और वहाँ पे जाके खासकर जब यूएई के अंदर उनका जो फेवरेट फ्रेज था ट्रम्प का जो कैंपेन में यूज़ करते थे, ड्रिल बेबी ड्रिल, जो एक्सटेंसिव प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल और फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे थे, उस फ्रेज को दोहराया गया. और ये इंडिकेटर था दैट जो अरब सोसाइटीज़ हैं दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शंस, समथिंग दैट ट्रम्प हैज़ बीन सपोर्टिंग एज वेल.
ऑल्दो लार्जर गेम में इन द लॉन्गर टर्म जो जिस तरीके से अरब स्टेट्स इन्वेस्ट करती जा रही हैं और अपनी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, तो इट इज़ लाइकली टू हैव a transition away from oil, but in the short term this is likely to have global negative impacts on the global climate change, because the Arab states are seem to be on the same wave as the Trump is on the issues of climate change. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि ये जो विजिट है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और डोनाल्ड ट्रंप का पर्शियन गल्फ का, ये सिंबॉलिक भी है और एक्चुअल भी है. It has importance not, and its audience was not just the American people and the Arab world, the audience was the broader Middle East as well as the international community. And this also is a clear indication that Trump is gradually moving away from the peace efforts in Ukraine, because he thinks that Europeans are not aligned with that, and let Europeans deal with that. And his focus turns to be more domestic, more inward, and to follow up the promise of making America great again. Thank you so much, Nazim, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.